एंड स्क्वायर एआई चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम के बारे में पढ़ने जाए। इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम लोग पाइथन से भी रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम से एक मॉडल भी ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह लास्ट में। चलो पहले ओके जाते हैं अपने लेक्चर पर। डू यू वांट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। पहले समझते हैं व्हाट इज मीन बाय फॉरेस्ट रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम रैंडम फॉरेस्ट इज अ सुपरवाइज्ड मशीन। हमारे पास कौन सा मशीन लर्निंग का टाइप है? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग कौन सा टाइप था? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग वो मशीन लर्निंग का वो टाइप जिसमें हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं लेबल डेटा से। लेबल डेटा में जिसमें हमारे पास लेबल भी होते हैं और फीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, डेट कंबाइंस मल्टीपल डिसीजन, मतलब ये मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को कंबाइन करता है। चलो समझते हैं कि डिसीजन ट्री क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ओके 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 5 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को ओके 5 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ओके ओके हम ओके एक फ्रेंड ने पूछ आस्क किया कि कौन कौन इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। ओके, उसमें उसमें 3 ने कहा मुझे जाना है। ओके, 3 ने कहा मुझे, 2 ने कहा नो हम लोग को नहीं जाना। ओके ओके 3 ने कहा मुझे वी वांट टू गो यस। ओके, और 2 ने कहा मुझे नो। फिर उसी तीनों में से ओके उसी तीनों में से ओके 2 ने कहा मुझे नहीं। ओके, मेरे पास डॉलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मनी में से डॉलर से डिनोट करता हूँ। ओके, उसी ने कहा हम लोग पास डॉलर नहीं, पैसे नहीं। ओके, और एक उसमें से कहा कि हम लोग पास मेरे पास डॉलर है। ओके, डॉलर मौजूद है। ओके, तो हम लोग इससे प्रेडिक्ट करते हैं कि हम लोग जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग ओके किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डिसीजन ट्री कहते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप ओके उसको हम लोग डिसीजन ट्री कहते हैं। और हम लोग पास जो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम में मल्टीपल डिसीजन ट्रीज होते हैं। क्या? टू मेक मोर एक्यूरेट, ताकि हम लोग पास एक्यूरेट प्रिडिक्शन आ जाए। ओके, एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाए। ओके, इसका रीज़न क्या क्या? ताकि हम लोग पास एक्यूरेट प्रिडिक्शन हो जाए। ये हम लोग पास क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है और रिग्रेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। क्लासिफिकेशन क्या है? जिसमें हम लोग ओके यस या नो के 2 कैटेगरी होते हैं क्लासीफाई करना। ओके, रिग्रेशन पर हम लोग वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं कि हम लोग ये ओके रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं एज वेल एज रिग्रेशन के लिए भी, प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ओके, वाई रैंडम फॉरेस्ट, क्यों हम लोग पास रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कि उसका बेनिफिट क्या? ओके, ये हम लोग पास और फिटिंग रिड्यूस कर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग पास कुछ ओके जैसे लीनियर रिग्रेशन में होता है, उसे हम लोग पास ओके बेस्ट फिट लाइन ओके वो ओके वो भी रिड्यूस करता है, लेकिन ये उससे ओके जैसे फॉर एग्जांपल ये उससे भी और फिटिंग रिड्यूस करता है। ओके, हम लोग पास ये पहला हम लोग पास एक्यूरेसी को इम्प्रूव करते हैं, एक्यूरेसी को अच्छा करता है। ओके, हम लोग पास ये प्रिडिक्शन बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग पास इसमें मल्टीपल ट्रीज होते हैं। हम लोग पास जब मैंने बताया हम लोग पास एक सिंगल ट्री था, ये रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम हम लोग पास मल्टीपल मल्टीपल ओके ट्रीज लेते हैं, डिसीजन ट्री लेते हैं। ओके, अभी कुछ पैरामीटर्स ऑफ ओके फॉरेस्ट रैंडम फॉरेस्ट। ओके, नंबर एस्टिमेटर का मतलब क्या है? नंबर एस्टिमेटर ओके नंबर एस्टिमेटर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ट्रीज, आपको कितने ट्रीज चाहिए। ओके, नंबर ऑफ एस्टिमेटर का मतलब होता है ओके कितने आपको ट्रीज चाहिए। ओके, नंबर ऑफ एस्टिमेटर का मतलब क्या है? आप कितने नंबर ऑफ ट्रीज चाहिए। ओके, और दूसरा हम लोग पास है रैंडम स्टेट क्या होता है? हम लोग पास जब रेंडमली ओके जैसे हम लोग पास रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट को हम लोग पास एक्यूरेट करता है। जैसे हम लोग पास बार रैंडमली जब भी प्रिडिक्ट करे तो हम लोग पास रैंडम स्टेट इस तरह होता है कि उसको से एक्यूरेट हम लोग पास आंसर देता है। कि अब उसको रैंडम फॉरेस्ट को बोलता है कि आप रैंडमली आंसर नहीं दे सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, एडवांटेजेस ओके इसके हम लोग पास जो ओके रैंडम फॉरेस्ट के हम लोग पास एडवांटेज, हमारे पास हाई एक्यूरेसी, हमारे पास एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होता है। लेस और फिटिंग इसमें ओके कम होती है। और हमारे पास ये लार्ज डेटा सेट पर काम करता है। ओके, ये हमारे पास सपोर्ट करता है, क्लासिफिकेशन भी करता है और रिग्रेशन प्रॉब्लम दोनों को सपोर्ट करता है।
इसके डिसएडवांटेजेस, ओके इसके ओके मोर मेमोरी यूजेज, ये हम लोग पास मेमोरी बहुत यूज़ करता है। ओके सेकेंडली हम लोग पास ये इसमें ट्रेनिंग बहुत स्लो होती है। ये हम लोग पास जब हम लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं तो हम लोग पास ये आर्डर होता है कि टू इंटरप्रेट देना सिंगल ट्री, कि हम लोग पास सिंगल ट्री को हम लोग तो एक्सपेंड कर सकते हैं, बट जब हम लोग पास ओके मल्टीपल 10 11 ओके सर ट्री तो हम लोग उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ये हम लोग पास तीसरा ओके डिसएडवांटेज। ओके अभी पढ़ते हैं कि स्टेप्स टू ट्रेन अ मॉडल ओके यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। हम लोग रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम से एक मॉडल को ट्रेन करते हैं। ओके हमारे पास स्टेप्स ओके मैं पहले आपको डेटा दिखाता हूँ। ओके ओके ये हम लोग पास डेटा है ये ओके इसमें ओके इसमें हम लोग पास ये ओके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सैलरी और एज ये हम लोग पास कर क्योंकि हम लोग पास ये जो हम लोग पास टैक्स फॉर्म में तो हम लोग वो नहीं कर ओके ओके हम लोग इस प्रोजेक्ट ओके इस हम लोग ये जो रैंडम फॉरेस्ट हम लोग रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ करते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में ओके रिग्रेशन यूज़ करेंगे। ओके रिग्रेशन प्रॉब्लम क्योंकि हमारे पास ये ओके हम लोग को ओके सैलरी प्रिडिक्ट करना है। ओके प्रिडिक्ट करना है हमारे पास एज और फीचर मैं आपको वो देता हूँ हमारे पास फीचर और लेवल उसमें क्या है। ओके मैं पिक पेन को इम्पोर्ट करता हूँ, ये पिक पेन हम लोग पास आ जाएंगे। ओके हमारे पास ये रिग्रेशन प्रॉब्लम आज हम लोग ये यूजिंग ओके रैंडम फॉरेस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग पास पहले ओके ओके एज एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ये दोनों हम लोग पास क्या होगा, ये दोनों हम लोग पास फीचर्स होंगे। ये हम लोग दोनों हम लोग पास क्या होगा फीचर्स हो जाएंगे। ओके एफ ए से मैं शो करता हूँ एफ ए हम लोग पास फीचर होता है जैसे हम लोग का डाटा जो ट्रेन हो जाता है उस सैलरी जो हम लोग डाटा हम लोग के लिए मॉडल हम लोग के लिए जो प्रिडिक्ट हम लोग पास सैलरी लेवल हो जाएगा। ओके एल ए बी में इसको शो करता हूँ। ओके ये एज हम लोग पास जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हम लोग पास फीचर्स होंगे और हम लोग पास जो सैलरी और ये हम लोग पास लेवल के ये हम लोग पास जेंडर हो गया कॉलन हो गया हम लोग पास जो एजुकेशन कॉलन जो हम लोग जो भी इसको मैं क्या करूँगा ड्रॉप करूँगा। ओके जब मैं डेटा को क्लीनिंग पर जब डेटा क्लीनिंग स्टेप पर मैं आऊँगा तो मैं इसको क्या करूँगा डिलीट करता हूँ। ओके डिलीट करूँगा। Okay, I hope you understood about what are our what will be our feature and label then in this project. वहीं पे हम लोग व्हाइट बोर्ड में ऊपर जाते हैं। ओके इंपोर्ट लाइब्रेरीज पहले हम लोग लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। फर्स्ट विल गो टू इंपोर्ट लाइब्रेरीज। ओके नाउ विल गो टू जुपिटर नोटबुक। ओके हमारे पास पहले मैं करता हूँ कि हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम प्रोजेक्ट। ओके ये इसको मैं मार्कडाउन में कन्वर्ट करता हूँ। ओके हमारे पास से हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाया जा रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। ओके रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम पहले हम लोग पास स्टेप क्या होगा स्टेप वन हम लोग पास ओके इसको भी मैं मार्कडाउन में कन्वर्ट करता हूँ। स्टेप वन हम लोग पास क्या होगा स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे ओके हम लोग पास स्टेप वन क्या करेंगे हम लोग लाइब्रेरी। ओके ये हम लोग पास ये लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। ओके मैं लिखता हूँ इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज। ओके लाइब्रेरीज को मैं इंपोर्ट करता हूँ तो हम लोग पास फर्स्ट स्टेप हम लोग लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। ओके ये हम लोग इंपोर्टिंग लाइब्रेरी इसके लिए ओके हम लोग पास एक तो पांडास क्योंकि हम लोग पास डेटा सेट लोड होने के लिए और डेटा क्लीनिंग के लिए हम लोग पांडास इंपोर्ट करेंगे। लिखता हूँ इंपोर्ट पांडास एस पी डी। ओके ये हो गया। इसके बाद फिर मैं ओके Scikit-Learn से मैं वो करता हूँ रैंडम फॉरेस्ट को इंपोर्ट करता हूँ डॉट लर्न sklearn डॉट इंजेम्बल में जब हम लोग मल्टीपल ट्रीज को यूज़ करते हैं तो हम लोग उसको इंजेम्बल कहते हैं। ओके फ्रॉम sklearn डॉट इंजेम्बल इंपोर्ट ओके रैंडम आप ये रैंडम
फॉरेस्ट, ओके फॉरेस्ट रिग्रेसर को आप, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में रिग्रेसर का प्रोजेक्ट, इस वजह से मैंने रिग्रेसर, हम लोग इसको क्लासीफायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब हम लोग ओके दूसरे वीडियो में फिर हम लोग उसको भी क्लासीफायर को भी हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग फिर उधर रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर भी हम लोग रिग्रेसर प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके इसके बाद फिर मैं ओके डेटा को फिर मैं वो करता हूँ, सेंटेंस में भी स्प्लिट करना होगा, तो मैं उसको भी इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम एसके डॉट लर्न, सॉरी डॉट गलती से लगा है, इधर भी मैं डॉट लगा है, ओके उसको मैं रिमूव करते हैं डॉट, ओके ओके डॉट मॉडल सिलेक्शन import model selection, import trend test split, ओके इसके बाद फिर मैं ओके एक्यूरेसी की रहता है कि मैं एक्यूरेसी चेक करने के लिए फिर मैं मीन एब्सोल्यूट रीडर, ओके मीन एब्सोल्यूट रीडर को भी पोर्ट sklearn डॉट मेट ओके मैट्रिसेस, ओके डॉट मैट्रिसेस, ओके डॉट मैट्रिसेस में इंपोर्ट करता हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके मीन एब्सोल्यूट एरर, अभी हम लोग पास जब हम लोग पास स्टार हो जिसका मतलब हम लोग का क्योंकि ये सेल रन हो रहा है, अभी हम लोग पास कुछ मिनट में ये सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। ओके अभी हम लोग पास जब ये हम लोग पास इंडिकेट है कि जब हम लोग पास जब ये स्टार आ जाए तो इसका मतलब कि हम लोग पास ये सेल एग्जीक्यूशन में है। ओके हम लोग पास से कुछ टाइम लेगा, ओके हम लोग पास एग्जीक्यूट हो गए, ओके पास 1 ओके सेल नंबर आ गए, ओके उन्होंने ये स्टेप कर लिया, उन्होंने जो उनके पास रिक्वायर्ड लाइब्रेरी थी उसको उन्होंने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग जाते हैं ओके लोड डेटा सेट, अभी हम लोग डेटा सेट को क्या करेंगे लोड करते हैं, ओके हम लोग पास है डेटा सेट, ओके हम लोग पास है डेटा सेट है, इसको हम लोग लोड करते हैं। ओके मैं इधर लिखता हूँ स्टेप, ओके स्टेप 2, इसको भी मार्कडाउन में कन्वर्ट करता हूँ, ओके फिर मैं लिखता हूँ कि हम लोग को अभी क्या करना है लोडिंग डेटा सेट, ओके अभी मैं डेटा सेट को लोड करता हूँ, इसको भी मार्कडाउन में कन्वर्ट करता हूँ, ओके लोडिंग डेटा सेट, ओके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर फिर मैं डेटा को इंपोर्ट कर pd डॉट रीड csv, ओके इसके अंदर फिर मैं देता हूँ ओके ये हम लोग पास ये इस डेटा का नाम है सैलरी अंडरस्कोर डेटा, ओके डेटा सैलरी अंडरस्कोर डेटा डॉट csv, ओके सैलरी अंडरस्कोर डेटा डॉट csv, ओके फिर मैं डेटा वेरिएबल को क्या करता हूँ एग्जीक्यूट, ओके मैंने इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। हम लोग पास ओके हम लोग पास ये डेटा है, हम लोग पास एज जेंडर एजुकेशन लेवल जॉब टाइटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सैलरी, ओके ये हम लोग पास है डेटा, ओके उन्होंने क्या कर लिया उन्होंने कम्प्लीटली डेटा सेट को लोड कर लिया। मैं चेक करूँ कि मैं हम लोग पास लास्ट 10 रोज हम लोग पास कर रहा है कही दे डेटा डॉट टेल कि मैं लास्ट 10 rows I want to check this my last 10 rows, okay if I want to check the okay first 10 okay dot head 10, these are first okay 10 rows, okay these are first 10 rows, okay then we'll go to again another step. Or another step is select features and label, okay we will select
features and label from our data. Okay, okay, select features and label. Okay, now we will go to again our Jupyter notebook and we will select okay feature and label. Okay, feature and label. I will use our will be okay step 3. Okay, now we will okay, now this our data is not clean. First we will clean it. Okay, first we'll clean it. Okay, now we will use the step 3 to clean this. Okay, sorry, I didn't wrote in my notes, but it is important step 3. Okay, we will clean our data set. Okay, cleaning data set, cleaning data set. Okay, we will clean our data set. Okay, there are some, okay, there are some null. Okay, null values are present, and this few okay few text column like gender, education level, and job title. We will also drop this, we will also drop this column. Okay, okay, then I will also convert this into markdown. Okay, this will be converted into markdown. The new data set. Now I will, okay, I will check how many, okay, how many, okay, I will check how many, okay, how many nulls will are present. Okay, data dot is na, okay, I want to find its sum dot sum. I will enter it. Then in gender, okay, this age, in this age we have two null value. In gender we have a two null value. In education level we have a 3. Geographical we have again 2, and in year of experience we have again 3 null values, and in salary column we have also now 5. Okay, 5 null values. First we'll drop this, okay, this few column like gender, education level, job title. Okay, first we will what first we will drop this, okay, this column first. Okay, okay, now I will do it like that. Okay, I will make another. Okay, like for example I will make another. Now I cannot drop permanently from this data set. I will make a temporary, okay, okay, temporary variable. I will store in that new data. Okay, so I will make data 1. Okay, our name, the new data name will be data 1. Okay, data 1. In this, okay, in this I will, okay, I will, okay, data, because of our okay previous, okay, previous data was data dot drop, data dot drop. Now I will columns, columns equal, columns equal, I want to, okay, in list I will use, okay, our first column is age. Okay, I will copy it and I will paste here, then I will the comma, after the comma, okay, then I will give this gender, control C, copy, I will paste here, and our third, okay, third column which we want to drop, that is HK. Okay, sorry, why I want to this, sorry, I will place it because of we need age. I will delete number, gender, then education level, control C, control V, paste, then again, so there is, okay, okay, then we have, okay, then we have job title. Okay, job title, okay, job title. Okay, then I'll paste here our job title. When I will run it, then now I will check again my data 1. Then here will be my new data set, in which, okay, the gender, education, and job title will be drop. Okay, now it completely drop. Okay, the gender, education level, job title,
Okay, now we will check if there are if in this age years of experience or salary. If there are null value, I will also fill that null value with each column mean value. Okay, now I will check if there are, okay, if there are null value. Okay, I can use is an a function. Okay, data one is our new data. Okay, is our new data is data one dot is an a dot sum sum. Okay, now I will run. Now you can see that in age, okay, we have two null value. In years of experience we have 3, and salary we have 5. So I will fill this all null value with each column mean value. Okay, मैं mean value से fill करता हूँ. Okay, लिखता हूँ data 1. Okay, index I will this age. Okay, this age I will copy it, and I will, sorry, I do not want edge. Okay, in edge also there, and I will paste, control V paste, and I'll copy it, control C copy, then I will use the equal. Okay, equal, control V. I want to fill this dot fill an a with what, with this column mean value dot mean. Okay, now this is our one. The second one will data 1. Okay, then I'll give this years of experience. Okay, years of experience, control C copy, control V paste. I will copy it, control C copy, then I will use the equal. Okay, control V paste dot fill an a, control V paste dot mean. Okay, then I will also fill this, okay, value with mean value. Okay, data 1, then I will do quotes. I will use this salary. Okay, salary, control C copy, I will use control V paste. Sorry, I will delete it. Okay, I will use this salary, control C, I will paste here, control V paste. Okay, I will copy this, control C, then I will use equal. After the equal, then I will say that I want to fill this dot fill an a. Okay, I want to fill by this column mean dot mean dot what dot mean. Okay, I will run it, then it will be filled. Okay, now it has been filled. Now I will again check in our data 1. Okay, null value dot is an a. Okay, is an a dot sum sum. Okay, then I will use the run. Okay, then okay, it came that हम लोग पास आ गया कि हम लोग पास एज में हम लोग पास 0 नल वैल्यू, हम लोग पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी 0 नल वैल्यू, और सैलरी में भी हम लोग पास 0 नल वैल्यू मौजूद है. ओके, हमने ये क्लीनिंग ये स्टेप भी कंप्लीट कर लिया. ओके ओके, इसके बाद ओके इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग करते हैं. ओके, अभी सेलेक्ट ओके फीचर्स एंड लेबल. अभी हम लोग को सेलेक्ट करना है फीचर्स और लेबल. ओके ओके, मैं इधर बनाता हूँ कि स्टेप 4 okay, I will write there we are selecting features and labels. Okay, now we want to select features and labels. Okay, now how? Okay, then we know that in x-axis we have features, and on y-axis we have labels. So I will, okay, in x-axis I will say that x-axis data 1. Okay, our features are age. Okay, I will copy it,
control C, this control C copy, okay, control V paste. Then our second feature is, okay, this years of experience. We want to predict salary, so if salaries are label, okay, I will paste here this one. Okay, so we know that okay, we use double square bracket when we give the features. Okay, it is compulsory. Okay, then we say y, okay, y equal data 1, and our label is what? Our label is salary. So I will control C, I will copy it and I will paste here. Okay, we completely selected our labels and features. Okay, okay, that now we will use train and test split. Now is our step to train and split to okay, train test split means, okay, train and test split means, okay, I will decrease this. Train split, okay, train test split means split, it means that we will get okay, divide data into two types, divide data into two, okay, into two, it means into two categories. Number one we have test, number second we have, okay, okay, train. Okay, test means when we want to test our how our model is working, and train when we want to predict something, then we will use the train. Okay, so we, okay, we can keep, I will give the 20% test and other remaining person I will give in train. Okay, this data 20% in train, and okay, okay, this is, okay, this is our 20% test, and okay, and our 80% will be train. Okay, 80% train. Okay, this will, we will use this, okay, this approach. Okay, this is okay. Okay, then we will use this. Okay, then, okay, that's why we use the test train test split. Okay, to categorize our data into two types, one test and one train. Okay, now we will do this step. Okay, we'll again to go to our Jupyter notebook, and this is our step 4 with step 5. Okay, step 5. Okay, step 5. Okay, in this step 5 I will give, okay, what do you want to do? We want to train test split data, train test split, okay, train test split. I will also convert this into markdown. Okay, then I will pass, okay, train test split. Okay, it is our step 5. Okay, we want to convert our data into two categories. We want to divide our data into two, one is test and one is train. Okay, test we use when we want to check our model accuracy, and the train we, okay, the train we use when we want to predict or okay, predict something, then we use our train. So okay, so I will make 4 variables: x train, x train, x test, comma, y train, comma, y test. It is, then I will use the model. Okay, then then which we, okay, which we imported, this one, train test split. Okay, I will use train test, okay, train test split. Here we give the first, okay, we give the first, okay, our, okay, feature, our feature is x and our label is y. Then we give test size, we want to give the test size, okay, 20%. The size I will give the 0 point, then it will convert into 20%. Okay, I will give the random state,
random state. Okay, random. Okay, random state. Okay, random state. I'll give 42 to okay. To okay, random state. Okay, then I will run it. Then I will also okay. Then we okay we categorize. Okay, we divided it, our okay our data into two categories. One, train and test. So we did this step 5 also. Now we will go to another step. What is another our step? Train random. Okay, now we will make a model. Okay, now we will train a model using what? Using random forest algorithm. Which algorithm? Random forest algorithm. We will again go to our Jupyter notebook. Okay, this is our step 6. Okay, step 6. These are step 6. Okay, that is okay, train a model using random okay, random forest. Okay, we will use this. Okay, now I will make a model variable, then I will make its object. What will be our object? Then which we imported this. Okay, random forest. Okay, regressor, random forest regressor. Okay, I will copy here this random forest regressor. Control C. Okay, then I will paste here. Okay, then we want to give how many decision tree we want to decision tree. Okay, we can n estimator estimators. Okay, estimators we want to give, like for example we will give the 10. Okay, we want to 10 decision tree. Okay, okay, then I will say that model dot fit. I will fit what? I will fit okay, it is x. Okay, extend y. Okay, y train, extend comma y train. Okay, okay, then I what I made a okay, this is now this is okay, our random forest regressor. We okay, we train a model. Okay, this is okay. Now random forest regressor, how many decision tree we have? We have 10 decision tree. Okay, now we want to okay, okay, now we want to study more about it. Okay, then there will be document. Okay, you can study more about in free time. Okay, this is random forest regressor class we can import from sklearn dot in which okay, in which object we can dot example with multiple trees. Okay, we can give 100 also, but I give the 10. Okay, so we train a model. Okay, this is our model which we train it in this. Okay, how many decent tree? 10 decent trees are present. Okay, now we will go to another step. Okay, we train a model, then we will go to another step. Our another step we will predict. Okay, now we will predict, like for example okay, predict means like okay, predict. Okay, predict means like for example giving features and taking in output, taking output what? Labels which are okay, which our model give the output, that is label. Okay, it means prediction. We will give the another feature. Okay, another employee. Okay, then it will give us okay, then it will give us okay, then it will give us what? Then it will give us okay, that okay, that label. Okay, so okay, predict. Now I will go to this is our steps. Okay, step 7. Okay, step 7. Okay, these are step 7. I will convert into markdown. Okay, markdown step 7.
It is about predict. Okay, mark down. These are predict. Okay. Okay, in this, for example, I will ask, okay, like for example, okay, new employee. I will give the new employee, okay, new employee, okay, new employee. Now I will use the dot predict, model dot predict, model dot predict. Okay, I will give the label. Okay, I said that we use, okay, we use double, okay, double square bracket. I will give, for example, okay, our label was okay, our label was age. I will give the, okay, age of new employee 34, and years of experience, maybe I will give the 10 years. Okay, okay, 10 years. Okay, then I will use here to, I only want only the value. Okay, the only value. Then I will print, okay, print new employee, new employee. Okay, okay, the new employee salary will be, okay, 1 3. I will also give the salary. Okay, salary will be, okay, which our model predict, okay, this way. Okay, salary will be what? Salary will be 1. Okay, this will be the salary. Okay, okay, now for example, I want to round it. Okay, round it. Okay, this is the round. Okay, I round it. Okay, okay, then this is, okay, this will be the salary. Okay, we predict it. Okay, it is not related because it is saying that you made a, okay, model, you train a model, it is saying this. Okay, it is annotated. Okay, the salary will be this. Okay, now we will again go to, okay, then the last, okay, the last step is, okay, the last step is about calculate accuracy. Now we will calculate accuracy, how our model is accurate. Okay, now we will what, now we will check the accuracy of our model, okay, how many percent our model. Okay, okay, now for example, okay, okay, which I loaded, okay, which I import in first. Okay, this is mean absolute. I will check mean absolute by mean absolute. Okay, error. Okay, so I will give the y predict equal to, now by test, I said to by test data we will evaluate our model. Okay, I mean, okay, we will check the, okay, situation of our model. Okay, so y predict, I say model dot predict, I will say that x test. Which test? X test. X, okay, X test. And okay, then I will use, okay, okay, mean absolute. Okay, mean underscore, I'll set mean absolute. I'll give the short form error. Okay, to the mean absolute. Okay, then I will use, okay, mean absolute error. I will give, okay, y test, because of I said we will check the by test data our model, we will check the evaluation of our model by test data. Okay, y test, and this, then y predict. Okay, then we'll print, okay, print mean absolute error. So our mean absolute error is, okay, 1 4. It is, okay, it is so large, so our model is not perfectly good, because if we have a less data, okay, our data was less, and we have, okay, less feature, that's our data is, okay, our error is, okay, large. If our data and feature will be large, then inshallah our model will be trained good. Okay, okay, now, okay, little bit it is perfect, but it is not more perfect. Okay, so if you want, if our model want will be good, so we will a lot of feature, we will add a lot of feature, and we will add more data. Okay, our data is also less. Okay, so we did now, okay, summary of this. Random forest is an example of this. Example means multiple decision tree that improves prediction, जो हमारे पास prediction performance and reduce और fitting करता है. Okay, हमारे पास ये सारा random forest के बारे में था.
इंशाल्लाह फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।